Hello everyone, in this video we are going to see how to write 9 bands. The target is getting 7 plus bands in formal letter in IELTS, but अगर आप सारे criteria को follow करोगे you will be able to score even 9 bands for your letter. अब why letters? Because they are important. Remember task 1, task 2, चाहे task 1 की जो marking है वो 0.33 है और 33% है and task 2 की 66% है. Yes, it's twice, but जो scoring criteria है वो 33% and 66% रहता है. If you have been our student, Marvel IELTS, Marvel Education student, आपको ये सब criteria we would have explained in detail, but बहुत सारे students who are watching this video on Facebook, on YouTube or Instagram, they haven't attended our lectures, तो इसलिए I'm helping them, I'm telling them so that they understand how to attempt and get marks in your letters. अब स्टूडेंट्स को लगता है कि सर 150 वर्ड्स हैं उसमें 7 प्लस बैंड्स हमें चाहिए, स्पेशली आजकल जो क्राइटेरिया 7.5 बैंड्स या 8 बैंड्स भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं. उसके लिए लेटर्स हैव बिकम इम्पॉर्टेंट, राइट? बिकॉज अगर आपके लेटर में 6 आ रहे हैं तो आपको ऐसे में 7 चाहिए. अगर आपका जो मीडियम स्कोर है, इफ़ यू वांट टू गेट इट टू 7, देयर हैज़ टू बी 1 बैंड और 1.5 बैंड डिफरेंस. बट एसेज में ऑब्वियसली हम ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं. 250 वर्ड्स लिखने होते हैं. लेटर्स में वी जस्ट हैव टू राइट 150 वर्ड्स. सो ऑब्वियसली इट विल बी यूजफुल फॉर यू इफ यू आर एबल टू स्कोर लेट्स से 8 बैंड्स इन लेटर, ताकि अगर आप 6.5 बैंड्स भी स्कोर करें और 7 बैंड्स भी स्कोर करें, स्टिल जो आपका टारगेट है 7 प्लस बैंड्स वो आप अचीव कर सको. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. We are your Masters trainers. Vanita ma'am coaches you for IELTS. I, Bhrat Brij, coach you for IELTS as well as PT. And this is my scorecard. I have scored a perfect 90 in PT, 90 out of 90. Now students ask, sir, आप अपना IELTS का score क्यों नहीं दिखाते? I have scored 9 bands in IELTS also. But one thing which you need to understand is this, that PT का score is more detailed. इसमें you are able to see grammar में मेरे 90 out of 90 हैं. And by the way, if you are scoring 85 plus in your PT, you are getting 9 bands. So I have scored 100% marks. So whatever I'm going to tell is going to work because I have scored a perfect scores in grammar, in spellings, in vocab, in written discourse. Written discourse means आपने किस तरह से लिखा है, जिसको हम coherence, cohesion, right, कहते हैं IELTS में. So that's why I show my PT score. And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. So this is today's topic, right? You are living in a university residence and you have a problem with high levels of noise coming from a new campus restaurant. The pronunciation for this is going to be restaurant, okay? Ab, remember there are two kinds of English, British English and American English. And we follow British English because Asia में, जैसे आप इंडिया में हैं, चाहे आप कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, but you are looking for PR. The reason is this, that you English is not your native tongue. So हम जो born and brought up हैं वो British English में हैं. So that's why we are going to use British English spellings as well as British English pronunciation. Okay. Write a letter to the governor of the university. आपको governor को letter लिखनी है. In your letter, complain about the situation, so why this is a problem and propose ways to reduce the noise. Begin your letter with dear and यहाँ पे आपको dash दिया हुआ है, means यहाँ पे आपको fill up करना है. Do not write any addresses, कोई addresses नहीं write down करने हैं and you have to write down at least 150 words. Okay. अब स्टूडेंट्स को लगता है सर क्या इतना सिंपल है, इसमें तो हम 7 बैंड्स ले आएंगे. बट IELTS की जो स्कोरिंग है वो ओपेक है. व्हेन आई से ओपेक, आपको नहीं पता चलता आपने टास्क 1 में कितना स्कोर किया, टास्क 2 में कितना स्कोर किया, राइट? अब आपको जो ओवरऑल स्कोर मिलता है 6.5 मिलता है. नाउ यू डू नॉट नो कि आपने ऐसे में 6 स्कोर किया, 6.5 किया, दोनों में स्कोर किया. द आंसर इज नो. If you have attended our detailed lectures, we have covered this thing in detail, that how you have to hack your writing scores. Yes, you can hack your writing scores. You can get 7 plus bands, 8 plus bands, even 9 bands. अगर जो हम strategies आपको बताएंगे आप उसको सही ढंग से implement करोगे तो. Coming to the scoring criteria, which is very important because बहुत सारे students को scoring criteria ही नहीं पता होता कि letters का कितना scoring criteria है.
If you are our existing student, चाहे Marvel Education और Marvel IELTS के online student हैं, in institute student हैं, we have explained these criteria in detail to you, but still I will get you a quick brush up so that you things get fossilized in your thought process in your brain, ताकि आपको criteria याद रहें, and then you have to attempt your IELTS writing letters according to this criteria. So there are 4 criterias of marking and each is equal 25%, right? So task achievement 25%, coherence and cohesion 25%, lexical resource 25% and grammatical range and accuracy 25%. अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारी ग्रामर वीक है इसलिए मार्क्स नहीं आते. ओके एग्रीड, पर ग्रामर इज जस्ट 25% और बाकी 75% पे अगर आप होल्ड अपना बना लो, स्ट्रॉन्ग होल्ड रख लो, तो it will be easy for you to score 7 plus bands, even 8 bands. अगर आप इनमें 9, 9, 9 भी ले लेते हो और इसमें अगर आप 6 भी लेते हो, still you are going to get 8 bands or let's say 7.5 bands, right? So that's why it's important to write as per the criteria. So let's see the criteria in detail. But before that, there are 3 kind of letters. One is formal, semi-formal and informal. I'm not going into basics. You know that जो आपका task है, that is a formal letter. Okay, so let's see the task criteria for letters in detail, right? Specifically letters की बात कर रहे हैं हम. So task achievement more or less related to content होती है, that are you able to provide the overview of the information? Are you able to select the important information, and along with that you have to provide supporting details, and you have to write at least 150 words, and there is more than this criteria. We have explained in our lecture series for our students about this, but over here it's a quick brush up, so I'm just covering the detailed criteria. We are certified instructors. Vanita ma'am, I and Marvel IELTS team is certified team by British Council, IDP. Myself, I have scored 9 bands, so we know this criteria by heart, and I want you to understand this criteria ताकि आप उस तरह से letters write down करें ताकि you are able to achieve your target score. So second is coherence and cohesion. It's all about organization of your content. अब इसमें see यहाँ पे आपको लिंकिंग का ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मेन और सपोर्टिंग आइडियाज़ को लिंक करना, राइट? सो यहाँ पे आपको मेन आइडियाज़ भी लिखने होते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स भी, सपोर्टिंग पॉइंट्स भी लिखने होते हैं, बट अगर आप उनको लिंक नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर गुड. So you have to link those main ideas with supporting ideas in a correct manner. It is very important to understand कि जो आपको लिंकिंग करनी है वो appropriate होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी linkers use कर लिए and you will be able to score marks. No. So that's why you have to use linkers appropriately. अब एक ये point जो बहुत ज़्यादा you can say underdog है and students इसको नहीं समझते, नहीं implement करते. You have to use the paragraphs appropriately. आपको पता है आपके कितने paragraphs होने चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5 letters के लिए. The answer is no. कुछ students कहते हैं sir 3 paragraphs, कुछ कहते हैं 4 paragraphs, कुछ कहते हैं 2 paragraphs. We have covered everything in detail in our online lectures as well as in institute lectures. So अब reference words को use करना to avoid repetition. अब reference words क्या होते हैं? If you have attended our course already, you know that. And reference words more or less are pronouns, and you have to present the information in a logical order. ऐसा नहीं है कि आप अब let's say एक example, you woke up, then you took a bath, then you ate breakfast, then you came to office, right? तो एक logical sequence में आपको answers करने होते हैं. आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि I took a bath, then yeah, just 15 minutes before I woke up, then after an hour I took breakfast, and then I ran off to the office. No, you cannot say like this. This is not a logical sequence. So it's important to understand कि आपको logical sequence में answers करने होते हैं. Coming to the next part, vocabulary. अब students यहाँ पे hi-fi verbs learn करते हैं, tough words learn करते हैं, जिनका उनको contextual meaning ही नहीं पता होता. And we have shown so many mistakes जो students commit करते हैं जब वो अपने vocab part use करते हैं. So I will tell you in this as well as in the detailed lectures that you have to make sure आप वो mistakes ना करें. So less common vocab use करनी होती है, but इसका मतलब ये नहीं है hi-fi tough vocab use करनी है, right? आपको सही words choose करने होते हैं for vocab marks. Then you have to choose words that go well together. What are these? These are your collocations, okay?
words that go together. And we have a complete collocation course for our students. When you enroll for our IELTS course, we provide you the collocations course also. एंड स्पेलिंग द वर्ड्स करेक्टली, स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. स्टूडेंट्स को यही आइडिया नहीं होता कितने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर सकते हैं, बिकॉज आइल्स में ये क्राइटेरिया वेल डिफाइंड नहीं है. बट फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस वी हैव फाउंड आउट एवरीथिंग एंड वी टीच एवरीथिंग इन डिटेल इन द ड्यू कोर्स ऑफ आवर लेक्चर्स. एंड देन यू हैव टू यूज प्रिसाइज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस. आपको प्रिसाइज वर्ड्स और एक्सप्रेशंस भी यूज करने होते हैं. Coming to the last part, which is grammar, you have to use correct punctuation, you have to use right tense and voice. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही आइडिया नहीं होता कि पैसिव वॉइस यूज़ करनी है, उनको नहीं करनी है, या एक्टिव वॉइस यूज़ करनी है, मिक्स करना है, नहीं करना है. You have to remember that letters में you are not going to use passive voice at all, and we will keep reminding you about this criteria also. Then you have to use the words in correct form. मीन्स आईएनजी वाली फॉर्म में यूज होंगे, ईडी वाली फॉर्म में यूज होंगे, बेस वर्ब यूज होगी. एंड देन range of sentence structures. We have a complete British English course in our grammar course where we teach you complex structures, how you can make complex structures, compound structures. Students को यही आइडिया नहीं होता कि complex sentences क्या होते हैं, compound sentences क्या होते हैं. So we have covered in detail. But remember, you cannot score 7+ bands until you use a range of sentence structures. So this was the criteria in brief, and moving on to the response. So first you have to identify the type and the purpose of your letter, then you have to plan, then beginning में greeting is very important, then introduction में आपको purpose लिखना होता है, then you have to communicate and you have to make sure that you are communicating in a right tone with correct vocab, and conclusion, along with after conclusion there will be signature. So this is how you have to plan your letter. This is the logical flow. Remember, हमें हर चीज logical sequence में लिखनी है, and this is the logical sequence. Moving on to the skeleton of letters which we use. Greeting, सबसे पहले greeting होती है, then introduction plus purpose of writing, then there are 3 bullet points जो आपको bullet points letter में दिए होते हैं. You have to make 1 paragraph each. And then in conclusion आपको closing line लिखनी होती है, and then along with that signature, right? So this is the rough skeleton. If you have attended our course, you know that we have a separate skeleton for informal letters, for formal letters or semi-formal letters, but this is the generic skeleton. And if you are a student, अगर आपने हमारे lectures already attend किए हुए हैं, you would know that in detail. Now time management, very important, because students क्या कहते हैं, so 20 minutes letter में लिखने होते हैं, एंड हम कभी कभार 20 मिनट्स लेते हैं, 25 या 30 मिनट्स हम लेटर में ही लिखने में लगे रहते हैं, और सर ऐसे हो ही नहीं पाता, इसलिए हमारे कोर्स नहीं आए. यू हैव टू प्लान एवरी मिनट ऑफ योर IELTS. 60 मिनट्स होते हैं आपके पास. यू हैव टू स्पेंड 20 मिनट्स ऑन योर लेटर्स, 40 मिनट्स ऑन योर एसेज. अब उस 20 मिनट्स में फर्स्ट 5 मिनट्स आपको प्लानिंग करनी होती है चीज़ों की. इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू प्लान. इन नेक्स्ट 10 मिनट्स यू हैव टू राइट, and then जो आपके 5 minutes रह गए हैं, you have to check or you have to proofread. And in our lectures we have explained the importance of proofreading enough, because proofreading has the power to increase your band scores to 0.5 or even 1 bands, right? If you proofread all those things which we have covered in our lectures, I can assure you कि आप अपनी mistakes find out करेंगे. We tell you how to find out your mistakes, and then you can see even 0.5 or 1 band improvement. Okay, so this was today's topic, जहाँ पे there is a problem with high levels of noise जो आपकी न्यू कैंपस रेस्टोरेंट से आ रही है, because it is open till midnight. देर रात तक ओपन होता है. midnight means 12 o'clock तक. तो आपको गवर्नर को या चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, जिसको हम यहाँ इंडिया में कहते हैं, लेटर लिखनी है. अपने लेटर में आपको कंप्लेन करनी है, देन एक्सप्लेन करना है क्यों ये प्रॉब्लम है, एंड देन यू हैव टू प्रपोज और सजेस्ट कि कैसे नॉइस रिड्यूस की जा सकती है. So right, so first thing, remember, according to that you have to do the planning. And how we plan? Like this. सबसे पहले आप, if you want, you can write down that आपको क्या क्या प्लान करना है. आप सिंपल शॉर्ट फॉर्म्स भी लिख सकते हो, लाइक G फॉर ग्रीटिंग, I फॉर इंट्रोडक्शन, बुलेट पॉइंट 1 जिसमें आपको कंप्लेंट करनी है, बुलेट पॉइंट 2 में एक्सप्लेन करनी है चीज़ें, बुलेट पॉइंट 3 में सजेस्ट करने हैं वेज नॉइस कैसे रिड्यूस हो सकती है, then conclusion or closing line, and then signature.
So जब हमने अभी पीछे over here we had seen that first you have to identify the type and purpose, and we know that this is a formal letter. Formal letter है तो Mr. यूज होगा. अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं जिन्होंने हमारे ग्रामर कोर्स नहीं अटेंड किया, ब्रिटिश इंग्लिश रूल्स नहीं अटेंड किए हुए, जैसे कि सर यहाँ पे डॉट आएगा नहीं आएगा. द आंसर इज नो, ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं आता, एंड देयर आर सो मेनी ब्रिटिश इंग्लिश रूल्स which we are going to tell you in our grammar course. So please attend our grammar course if you haven't already attended it. So introduction में क्या रीज़न है आप क्यों लेटर लिख रहे हो, पर्पस क्या है आपका लिखने का, that is noise coming from the new canteen. So अब आपको पता है कि आपने इसके बारे में लिखनी है, ये प्रॉब्लम है, अब कंप्लेंट कैसे करोगे, राइट? रिमेंबर आपको मेन पॉइंट भी लिखना होता है और साथ में सपोर्टिंग डिटेल्स भी देनी होती हैं. मेन पॉइंट लेट्स से बुलेट पॉइंट 1 और उसके साथ उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स. सो कंप्लेंट कैसे कर सकते हो? नाउ आपको इतना भी इन्वेंटिव क्रिएटिव नहीं होना कि आप कुछ ऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स आंसर्स लिखो. नो, रियलिस्टिक, यू हैव टू बी रियलिस्टिक. कि आप बताइए अगर वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे बॉयज़ आते हैं, यूनिवर्सिटी है तो आपको भी पता है, हम सब कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल से ऑब्वियसली वी हैव डन दैट, तभी हम जनरल आइल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं. सो कॉलेज तो मोस्टली इसने अटेंड किया ही है, तो आपको पता है कैंटीन के आसपास कितनी बातचीत होती है, शोर होता है, शाउटिंग होती है, बॉयज़ बाइक्स टिल नेट लाइट लेके आते हैं, उनके साइलेंसर्स नहीं होते, नॉइस क्रिएट होती है, राइट? So these are the complaints. If you're going to spend 5 minutes on this, trust me, you can easily write in 10 minutes, because students कहते हैं सर 10 minutes में 150 words possible ही नहीं है. बट अगर आप इस तरह प्लान करके चलोगे तो ट्रस्ट मी आप 7-8 मिनट्स में लिख लेते हो. लेट्स से आपकी राइटिंग स्पीड या टाइपिंग स्पीड, स्पेशली अगर आप CDIELTS अटेम्प्ट कर रहे हो, एंड वी प्रेफर CDIELTS. व्हाई? बिकॉज CDIELTS में वर्ड काउंट होती है, आप साथ के साथ वर्ड काउंट देख सकते हो, एंड देन यू हैव अ टाइमर ऑल्सो on your screen. I will show you the screenshots, do not worry, right? So it's much easier to attempt your questions on CDIELTS, and our preferred way is CDIELTS क्योंकि यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट भी चलता है. पेपर बेस में आप वर्ड काउंट करते हो, एंड वी हैव कवर्ड हैसल इट कैन बी टू काउंट वर्ड काइंड, बट देयर इज अ गोल्डन रूल जो हमने अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है, वर्ड काउंट कैसे काउंट करनी है. द रीजन बीइंग बिकॉज वी आर सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स, हमें एक एक चीज पता है आइल्स की, राइट? सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? अब आपको रेलेवेंसी बनानी है. रियलिस्टिक एंड रेलेवेंसी आर द कीज जिनके थ्रू आप स्कोर कर सकते हो बेटर आइल्स में लेटर्स के. अब टॉकिंग हो रही है, शाउटिंग हो रही है, बाइक्स की लेट नाइट तक नॉइस आ रही है, तो क्या होगा? अब एक सिंपल सी बात है, लेट नाइट में लोग क्या कर रहे होते हैं? या तो वो स्टडी कर रहे होते हैं अगर स्टूडेंट्स हैं, या सो रहे होते हैं. बट स्टडी करना शोरगुल में डिफ़िकल्ट हो जाता है, सोना भी मुश्किल हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो टायर्ड होते हैं, अगले दिन नींद पूरी नहीं होती है. तो सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट रियलिस्टिक एंड रेलिवेंट रिगार्डिंग द कंप्लेंट जो आपने की है. अब आपको सजेस्ट करने हैं वेज. सी what we have done is we have planned, so it's easy, so this will be logical, right? आप देखिए कितना logically flow होगी information हमारी. So why we are not going to get marks for coherence and cohesion? We are going to get अगर हम सही ढंग से plan करते हैं. So अब आपको suggest करने हैं ways को, right? ways कैसे suggest कर सकते हो? You can say अब time reduce कर दो, कोई signs या notice में लगा दो कि noise नहीं होनी चाहिए. So these are again realistic ways. अब कुछ स्टूडेंट्स अनरियलिस्टिक सॉल्यूशंस देने शुरू कर देते हैं, कैंटीन क्लोज कर दो, कहीं और शिफ्ट कर दो. आप मुझे बताइए ये एक रियलिस्टिक सॉल्यूशन है, पॉसिबल सॉल्यूशन है इन रियल टाइम सिनेरियो? नो, दिस इज नॉट. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक श्योर कि आप रेलेवेंट और रियलिस्टिक आंसर्स और पॉइंट्स मेंशन करें. Closing line, you know that we have covered in detail in our online lectures, so I'm just going to take one closing line from that, which is thank you for your attention to this important matter, or this is a reference word, right? So you see we have taken care of all these criteria, so you need to know how to attempt. अगर आप हमारे lectures attend कर लिए हैं आपने letters के लिए, it will be a piece of cake, an idiom. And by the way, we have an idiom course also for our students, so that you can score 7+ bands in speaking also. And signature में formal है, so we are going to write the formal signature which is kind regards. अब students कहते हैं सर क्या हम दूसरे signatures use कर सकते हैं? No need, we have explained that in our lectures in detail.
So this is how you are going to write this. This is the holy grail, right? How you can score 7 plus bands, 8 or even 9 bands in your letters. If you are going to follow the pattern, the method we have told you, आप प्लान कर चुके हो तो 10 मिनट्स में आप इजीली ये सब कुछ राइट डाउन कर सकते हो. सो आर रिसिपिएंट, अब रिसिपिएंट कौन है? एक अननोन पर्सन है. आप गवर्नर को नहीं जानते होंगे बट गवर्नर का नेम जानते होंगे, मोस्ट प्रोबेबली यस, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली आपकी यूनिवर्सिटी का गवर्नर है, ठीक है, अननोन पर्सन है, आपको वो आपको नहीं जानता पर आप उसका नाम तो जानते होंगे ना, राइट? So that's why you have to write like this, dear Mr. Sam. अगर आप यहाँ पे डियर सर और मैडम देखोगे, आइल्स का जो हम एवेल्युएट करते हैं या जो आपका एग्जामिनर आपको एवेल्युएट करेगा वो देख के ही बता देगा, यार इसको तो ये भी नहीं पता, इसको सही क्राइटेरिया ही नहीं पता. अब जब डियर मिस्टर सैम देखेगा, नाम देखेगा, फर्स्ट नेम यहाँ पे देखेगा, he will be like wow, he knows how to write letters because ये नोन पर्सन है. आप अपने चांसलर का नेम यूनिवर्सिटी के या फिर आप अपने प्रिंसिपल का नेम जैसे लेट्स से जानते ही होंगे ना. आंसर इज यस. देन टोन, फॉर्मल ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं. अब किस टाइप की लेटर है, वी हैव कवर्ड द टाइप इन आवर लेक्चर्स, सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट. तो इसमें आप फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कर रहे हो? कंप्लेन कर रहे हो. सेकेंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रहे हो चीज़ों को और थर्ड पैराग्राफ में सजेस्ट कर रहे हो. सो ओवर हियर, सो क्या आप CE आर योर कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज कर सकते हो? फॉर्मल लेटर है, द आंसर इज नो. इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हो? द आंसर इज नो. फ्रेजल वर्ब्स और पर्सनल स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हो? द आंसर इज नो. फॉर्मल पोलाइट एक्सप्रेशंस यूज करने हैं? यस. फॉर्मल वर्ड्स यूज करने हैं? द आंसर इज यस. पैसिव वॉइस यूज कर सकते हो? द आंसर इज नो. सो यू सी, दीज आर द क्राइटेरिया जब आपके थॉट प्रोसेस में फॉसिलाइज्ड होंगे कि आपको क्या चीज़ें यूज़ करनी है, क्या चीज़ें नहीं यूज़ करनी, तो आप अपने आप राइट टोन यूज़ करोगे. बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन टोन ऑल्सो. ऑल दीज थिंग्स जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, दैट आर डन एज पर द स्कोरिंग क्राइटेरिया. So if you are going to follow it, if you are going to follow our course, you are going to get your target bands. Okay, so in formal greeting हो गई है. अब paragraph 1 में हमें क्या करना है? Cause of writing लिखना है. And these are standard phrases, formal polite expression, green highlighted हैं, and we have covered all those things in our lectures. So I'm simply using those standard phrases. I'm writing regarding the. अब रिगार्डिंग हम जनरली नहीं यूज करते. रिगार्डिंग क्या है? हमारा एक फॉर्मल वर्ड है. तो ऑब्वियसली राइट, वहां पे हमने देखा एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वर्ड्स था एक क्राइटेरिया, एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड टोन. एंड दिस इज हाउ वी टेल देम दैट दिस इज, वी नो दैट वी आर यूजिंग द एप्रोप्रिएट टोन, एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वर्ड्स. सो रिगार्डिंग द amount of noise coming from the new canteen, so this is your problem. Okay, cause of writing, तो आप बहुत क्लियरली हाईलाइट कर रहे हो. विच हैज जस्ट ओपन नियर माई यूनिवर्सिटी रेजिडेंस. ओके, अब एक चीज जो विच है, दिस इज अ रेफरेंस वर्ड, रेंज ऑफ वर्ड्स. रिमेंबर दिस ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट इज रेंज ऑफ वर्ड्स. तो हमें रेंज ऑफ वर्ड्स अपनी वोकैब भी दिखानी है. वी हैव टू यूज द रेफरेंस वर्ड्स बिकॉज यहाँ पे अब कॉमा यूज होगा. अगेन अ ग्रामर रूल, वी हैव अ कंप्लीट ग्रामर कोर्स एंड आई होप यू हैव अटेंडेड इट. सो विच इज अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. अब उससे क्या होता है? विच से पहले हमेशा कॉमा आता है, दैट से पहले कॉमा नहीं आता. सी, आपको ये बहुत सटल चीजें लगेंगी. अब एक चीज जो इसकी वर्ड है जो मैंने अभी प्रोनाउंस किया, उसके राइट स्पेलिंग्स क्या हैं? SUBTLE, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? सटल. आपको ये बहुत सटल चीजें लगेंगी. एंड प्रोनाउंसिएशन इज बाय द वे 25% मार्क्स इन योर स्पीकिंग. सो आपको सटल चीजें लगेंगे कि सर छोटी छोटी चीजें हैं, क्या फोकस करें, बट 6.5 to 7 bands और 7 to 7.5 bands और 7.5 to 8 bands इसी बेसिस पे आएगा आपका. ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो दीज थिंग्स. सो आपने कॉज ऑफ राइटिंग लिख दिया अपना पैराग्राफ 1 में. अब पैराग्राफ 2 में आपको क्या करना है? बॉडी पॉइंट 1 विच इज कंप्लेंट. ओके, कंप्लेनिंग. एंड कंप्लेनिंग किस के बारे में है? अबाउट हाई लेवल्स ऑफ नॉइज. सिर्फ इसी के बारे में बात करोगे आप. अब ये नहीं बताओगे कि ये प्रॉब्लम क्यों है या फिर प्रपोज नहीं करना शुरू कर दोगे वेज को. ओके, सो मेक श्योर दैट योर कंटेंट इज लॉजिकल सो दैट यू गेट मार्क्स फॉर योर कोहेरेंस एंड कोहेशन. अब हमने अपने लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि यू हैव टू शो द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. राइट, ऐसा नहीं है आप सीधा बैश करना शुरू कर दोगे नेगेटिव्स को.
फिर वो कहेगा ठीक है, अगर पसंद नहीं है तो जगह ही चेंज कर लो ना. नो, वी हैव टू से लाइक दिस. ऑल्दो आई एम प्लीज दैट, अब देखिए दैट से पहले कॉमा यूज नहीं हो रहा. दैट वी हैव दिस फैसिलिटी, दिस इज अ रेफरेंस वर्ड एंड वी, अब आपने यहाँ पे रेंज ऑफ वर्ड मी माई नहीं शो किया. आप एक फैसिलिटी में, कॉमन फैसिलिटी में रह रहे हो. ओके, यूनिवर्सिटी रेजिडेंस है तो कॉमन फैसिलिटी होगी. सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू शो इट लाइक वी हैव दिस फैसिलिटी. द रेस्टोरेंट रिमेन्स ओपन टू मिडनाइट ईच नाइट. आपने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. एंड एज अ रिजल्ट, राइट, अब आपने बुलेट पॉइंट 1 विच इज योर कंप्लेंट इनिशियलाइज किया है. देयर इज कंसिडरेबल टॉकिंग एंड शाउटिंग. वही पॉइंट्स जो आपने प्लानिंग में यूज किए थे वही यू आर गोइंग टू राइट, एंड दिस इज योर रियलिस्टिक सपोर्टिंग पॉइंट. The sound of motorbikes continues until about 12:30 each night. अब आपने अपने supporting point को expand किया है. Okay? Right, main point को support दी है तो supporting point को expand किया है कि obviously अगर 12 o'clock बंद हो रही है तो obviously last order जैसे जो students आए होंगे वो 12 बजे अगर बंद है, 12:15 12:30 तक ही बाहर निकलेंगे तो जो साउंड है वो 12:15 12:30 तक कंटिन्यू रहती है. सो आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या किया, कंप्लेंट की है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट. अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट 2 के बारे में बात करनी है और उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स देनी है. लाइक यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू गिव द रीजन. सिर्फ और सिर्फ रीजन देना है कि ये प्रॉब्लम क्यों है. ओके, दिस रेफरेंस वर्ड कॉजेज माई नेबर्स. माई नेबर्स मतलब आप अपने नेबर्स की भी बात कर रहे हो, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम ही नहीं, आप ये बता रहे हो कि एक बड़े लेवल की प्रॉब्लम है तो मेरे नेबर्स को भी प्रॉब्लम है और मुझे भी प्रॉब्लम है. अब एक चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कैसे लिखते हैं, मी एंड माई नेबर्स. नो, द राइट वे इन अ फॉर्मल लेटर और इन द करेक्ट वे इज माई नेबर्स एंड मी, क्योंकि आप अपने नेबर्स पहले बताना चाहते हो. ठीक है, मुझे तो प्रॉब्लम है बट बहुत ज़्यादा नेबर्स को भी प्रॉब्लम है, तो यू आर पुटिंग फोकस और एम्फोसिस ऑन द नेबर्स, लार्जर गुड के लिए. राइट, आके आप सोसाइटी का पहले सोच रहे हो, अपना बाद में सोच रहे हो. ओके, अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज. अब बिकॉज लिख दिया तो आपके रीजन स्टार्ट हो गए हैं. आपने इनिशियलाइज कर दिया है अपना बुलेट पॉइंट 2 विच वॉज गिविंग रीजन्स. एट दैट टाइम वी, अब वी मतलब आप सब, सिर्फ आप ही नहीं बट पूरी, जैसे रेजिडेंस है, पीजी है, तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ना चाह रहे हैं या सोना चाह रहे हैं. ओके, तो दिस इज द रियलिस्टिक सपोर्टिंग पॉइंट जो हम प्लानिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इन बोथ केसेस मीन्स फिर से रेफरेंस वर्ड कि आप चाहे पढ़ना चाह रहे हो, सोना चाह रहे हो. द नॉइज एंड कमोशन. अब कमोशन इज अ फॉर्मल वर्ड जिसको हम कहते हैं कि एकदम शोरगुल होना. अब जैसे एग्जांपल दूंगा, जैसे फिश मार्केट में एकदम सारी बहुत ज़्यादा नॉइज, सारे इकट्ठा बोलना शुरू कर देते हैं, किसी को समझ नहीं आता. लेट्स से जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं तो अब हम अगर माइक ऑन कर दें सभी स्टूडेंट्स का तो हर कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम पूछना शुरू कर देगा. मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो हर स्टूडेंट आंसर देना स्टार्ट कर देगा. तो दैट विल बी अ कमोशन कि सब इकट्ठे बोल रहे हैं, नॉइस पैदा हो रही है और समझ कुछ नहीं आ रहा. ओके, सो द कमोशन डिस्टर्ब्स अस. अब अस इसमें क्या है, एक रेफरेंस वर्ड है. आप ये देखिए रेंज ऑफ वर्ड्स, हम मी, माई, वी, अस, आर सारे प्रोनाउंस यूज कर रहे हैं, सिर्फ आई नहीं यूज कर रहे. बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ आई ही लिखते हैं, बट इट टेल्स दैट यू हैव अ लिमिटेड रेंज ऑफ vocabulary. So over here we are using me, my, us, and I am highlighting all this, and these are the reasons you are going to get 7+ bands, okay, for this kind of letter. Making us tired in the mornings or affecting the progress of our studies. अब एक सिंपल सी बात है, अब आप ये देखिए, या तो आप सोने की कोशिश कर रहे हैं या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. अब आप ये देखिए जो हमने यहाँ पे रीजन दिए हैं, पहले कौन सा दिया है, सोने की कोशिश, और दूसरा कौन सा दिया है रीजन, पढ़ने की कोशिश. अब उससे ही रिलेटेड आंसर. अब एक सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे स्टडीज की बात नहीं की मैंने, पहले किसकी बात की, टायर्ड इन द मॉर्निंग्स, क्योंकि वो सोने से रिलेटेड है. पढ़ने से रिलेटेड क्या है, the progress of our studies. Okay, so इसीलिए this is the logical sequence, so you have to take care of all these things. So we have expanded our supporting point. Okay, now I'm sure you will formal polite expression, appreciate formal words, that this is a very worrying situation for us all. अब आपने साथ में conclude भी कर रहे हो bullet point 2 को कि हाँ यार ये बहुत major problem है, worrying situation है. Now coming to the bullet point 3 or paragraph 4.
इसमें क्या करना है, आपको सजेस्ट करने हैं। क्या सजेस्ट करने हैं या प्रपोज करने हैं? सॉल्यूशंस टू रिड्यूस द नॉइस। कैसे प्रपोज कर सकते हो आप? आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट, कि आप ये कह रहे हो कि आप यू वुड लाइक टू सजेस्ट दैट, तो आपने बुलेट पॉइंट 3 इनिशियलाइज कर दिया। दैट कैंपस अथॉरिटीज रिस्ट्रिक्ट द कैंटीन्स ओपनिंग टाइम। अब आप ये देखिए, आपने यहाँ पे बुलेट पॉइंट 3 इनिशियलाइज कर दिया, दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट, तो आप बता रहे हो, आप सॉल्यूशंस देना स्टार्ट हो गए हो, प्रपोजल्स, बेसिकली सॉल्यूशंस भी नहीं, प्रपोजल्स, बिकॉज सॉल्यूशंस एंड प्रपोजल्स आर डिफरेंट थिंग्स। सो हमें एप्रोप्रिएट वो कैब यूज करनी है जहां पे हम प्रपोज कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्ट, अब हम क्या कहते हैं, फॉर्मल वर्ड है, रिस्ट्रिक्ट कर दो। रिस्ट्रिक्ट द कैंटीन्स ओपनिंग टू 9 PM मीन्स 12 PM से 9 PM कर दो, एटलीस्ट ऑन वीकडेज। सपोर्टिंग वन, अब ये नहीं हर दिन ही, कि आप उनका भी ध्यान रखना चाहते हो कि चलो ठीक है यार, वीकेंड्स पे हम लोग लेट उठते हैं, राइट, सारे ही थोड़े जॉली मूड में होते हैं, तो वीकडेज 9 PM तक कर दो, और लीविंग इट एट मिडनाइट ड्यूरिंग द वीकेंड्स, ताकि आप सपोर्टिंग पॉइंट अपना वन जो आपने प्रपोजल दिया है, दिस इज योर S1, सपोर्टिंग पॉइंट 1 और प्रपोजल 1, और बेसिकली सजेस्शन, दिस इज सजेस्शन, ओके। एक चीज ध्यान रखना, दिस इज सजेस्शन, नॉट सजेशन, and all this we have covered in our pronunciation rules. It during the weekend, so I propose, अब again because proposal दे रहे हो, so this is your suggestion number 2, क्योंकि आप propose कर रहे हो, आप solution नहीं दे रहे हो, there is a difference between proposal and solution, right? That we also put up some signs reminding users to keep their noise to an absolute minimum. तो ये देखिए, यहाँ पे आपने वही points लिखे जो आपने planning stage में discuss किए थे. These are simple steps that would make us all very grateful indeed. Okay, so again a formal polite expression, right, where we are concluding the bullet point 3. So I hope आपको ये clarity हुई है how you have to cover the bullet points in one paragraph. Now in closing line, formal polite expression, thank you for your attention to this important matter. Okay. And formal signature, we have discussed, kind regards with a comma, your first name and last name. So this is how you have to write a letter. And trust me, if you are going to write this letter, you are going to get 8+ bands. I'm not saying 9. Yes, you will get 9 because it depends on your implementation. Agar as it is ratta maar ke ye likhtoge, you are going to get 9 bands for your letter. So moving forward, this is the our software screenshot where you can practice these tasks and you have to write. Our software provides you 99.9% similar experience of computer delivered IELTS. It's better because word count यहाँ पे show होती है. You get a timer also to manage your time, right? यहाँ पे आपकी screen पे timer चल रहा होता है, and then आप यहाँ पे copy paste भी कर सकते हो. Cut copy paste computer पे work करता है. Okay? Then when you write, you see that आपके word counts increase हो रहे हैं. So जैसे ही 150 पहुंचता है, ये word counter green हो जाता है. Our word counter is powered by artificial intelligence. Our practice at Marvel IELTS is powered by artificial intelligence, so it helps in there. Okay. So over here you see if you have increased your word count, it's going to show red also, because we always tell to keep your letters between 150 to 160 words or so. And this is another important aspect of our software, where our software tells you the common mistake yourself. अब जैसे आपने यहाँ पे कॉमा और के बीच में स्पेस होनी चाहिए थी, नहीं है. इंडीड के बाद आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया है. प्रोग्रेस के स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं. अमाउंट के मिस्टेक्स गलत हैं. एंड देन यू कैन सेंड दीज आंसर्स जो आपने टाइप किए हैं फॉर मैनुअल इवेल्युएशन, वेयर मार्वल आइल्स टीम इज गोइंग टू चेक दीज. ओके. And these are the examples. Over here if you see, I'm writing regarding the amount. So आपको सॉफ्टवेयर बता रहा है कि यार अमाउंट एक अननोन वर्ड है, उसकी जगह आपको शायद अमाउंट यूज करना चाहिए. सेम फॉर प्रोग्रेस. एंड यहाँ पे आपने पंक्चुएशन मिस की है, सो यहाँ पे पंक्चुएशन आनी चाहिए. सो दैट इज द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Always remember, learning a language is like going to the gym. The brain needs exercise and brain needs repeated and regular exercise for it to develop. So practice is the key. जितनी practice करोगे उतना important है. And along with practice, evaluation and monitoring is important. Our artificial intelligence software helps you to evaluate and monitor your progress, and you can send your answers for your feedback so that you can know mistakes कि आपकी क्या mistakes हैं. That's all in this lecture. See you in the next video of this series. This is our phone number.
8699 121 121. So if you have any questions or doubts, you can contact us if you want to take in institute or online coaching. And do not forget to subscribe to our channel because we post such regular informative videos on a regular basis. We give wings to your dreams.